વ્યાસપીઠથી અપાયેલું આ ભજન એટલું બધું પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું, લગભગ બધે ગાય વર્ષોથી. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી, મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવન, મારા તનના ગણિયામાં તુલસી ના વન, હે મારા પ્રાણ જીવન, હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે, વારે વારે માનવ દેહ કદી ના મળે, કે ફેરો લખ રે ફેરો લખ રે 84 નો મારો રે ફળે, એ મને મોહન માળે, હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. આ ઇન્દ્રિયો તે આપી બાપ, ભૂખી તો મરી જાય. આ ગાયું, હા બાપા, ગાયું ને તો ગોંદરે નિરણ નિર્વી પુણ્યનું કામ, ઈ તરહી ન રે એના માટે અવેડા બાંધવા પુણ્યનું કામ. તો હે મારા નાથ, તે આપ્યું આટલું સરસ શરીર અને આવી મજાની ઇન્દ્રિયો, અને પાછો તું જ બોલ્યો ગીતામાં, ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યા હો. इंद्रियाणी पराणी श्रेष्ठ है. जिस तरह गाय श्रेष्ठ है, गाय को हम लोग पशु भी नहीं मानते. शरीर भले वो पशु के अंतर्गत हो, लेकिन 33 कोटि देवताओं का हम आश्रय स्थान मानते हैं गाय को. इंद्रियाणी पराण्या हो, इंद्रियां वाकई श्रेष्ठ हैं. तो तूने दिया है तो भूखी रखेगा, भूखा मारेगा क्या? प्यासी मर जाएंगी क्या? ना भाई, चरवा तो जाए, बात बराबर. खिले बंधा है, पशु છે, પાશબદ્ધ, પણ ચરવા હાટો છોડવી પડે. ચરવા જાહે. માણા ધોઈ લીધા પછી હાથમાં રાડું લઈ અને ગાયને ગોંદરે મૂકવા જાય. એ ધણમાં ભળી જાય ને પછી ઓલો ગોવાળિયો ત્યાંથી ધણ લઈને જાય ચારવા. છોકરા નિશાળે જાય, ગાયું આમ ચરવા જાય. અહીં શિક્ષક બોલે પણ ગોવાળ હવ ધંધે લાગે. इंद्रियां कर्म करेंगी, इंद्रियां अपने विषयों का चारा चरेगी. शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इंद्रियों का चारा है. लेकिन कौन वाला शब्द, कौन वाला स्पर्श इधर उधर भटकने न देंगे कृष्ण. वड़ो गोवालियो, गोपाल इंद्रियों की रक्षा करने वाला वही है. और इंद्रियों को इस प्रकार अच्छा चारा दे करके उन्हें तृप्त करने वाला, उन्हें पुष्ट करने वाला ये गोपाल कृष्ण है. बांसुरी से पुकारता है, वंशी से. और जब इनकी वंशी बजती है तो साहब चारा चरना भूल जाती है. ऐसा भागवत में वर्णन है, वेणु गीत में.
गावश्च कृष्णमुख निर्गत वेणुगीत पीयूषमुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः शावाः स्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुः गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। श्री कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः। कर्णपुटैः पिबन्त्यः। घास चरवानु भूली जा हिंदी घास चरना भूल जाती है और कान ऊंचा करके कान रूपी दोने में श्री कृष्ण वेणु नाद के अमृत को भर भर करके पीने लगती है ये गाइयां। और जो पीती है कान से वो फिर उसके थन से दूध बन करके प्रकट होता है। गायनु दूध है कृष्ण वेणु नादनु दूध में कन्वर्जन छे। नाद दूध में कन्वर्ट थयो गायनु दूध ही। इसलिए गाय का दूध अमृत। घास चरना भूल जाती है, पानी पीना भूल जाती है जब श्री कृष्ण वेणु बजाते। वाछरड़ा पण धावता होय पण ज्यां कृष्णनी वेणु वागे तो बधुं भूली जईने ये ते आम नाम कान ऊंचा करी कृष्णनी सामे जोए एना मोढा उपर दूधना फीण एमने चोट्या होय। शावाः स्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुः गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। ओहो अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूनन् विवेशयतोर्वयस्यैः। भागवतना श्लोकोनी मधुरता तो जुओ तमे, रस मीठा। शुकदेव अवधूत ने परीक्षित को मरना सिखाया। हाथ में दाड़े मरवानुं हतुं, तक्षकनो शाप हतो। શીખવાડ્યું ગોરખનાથની જેમ મરો રે જોગી મરો, મરણ હે મીઠા। હું તને મરતા શીખવાડું। वास्तव में ये मरना नहीं, ये मिलना है। सभी इंद्रियां अपने अपने रस को खोजती है। कान सांभळवा माटे पण कान ने कई बधु थोड़ू सांभळवू गमे छे। आंख जोवा हाटू छे, जोवू रूप एनो चारो छे, पण एने कई बधुई जोवू थोड़ू गमे। मधुर रस क्यों भागवत नो मधुर। भाषा कई भागवत नी समाधि। रंग क्यों भागवत नो भगवो। અને ભૂમિકા કઈ એનું કલેવર કયું, એની ભૂમિકા કઈ તો પરમહંસી, અને એનું કલેવર વેદ મંત્રાત્મક। ये स्वयं श्रुति रूपा वेद रूप है। इसलिए भागवत की 3 संज्ञा है। देखो थोड़ा एक भागवत के आचार्यों के प्रसाद को आप लोगों के बीच में वितरित करना चाहता हूं। 3 संज्ञा है। भागवत संहिता है, भागवत
ग्रंथ है, भागवत पुराण है। भागवत को संहिता भी कहा गया। ससंहिताम भागवतीम कृत्वानुक्रम्य चात्मजम। भागवत से ही प्रमाण। संहिता है भागवत, और जब संहिता कहते हो तो इसका तात्पर्य है वेद। इसमें जो कुछ है वो मंत्र रूप है। इसलिए कहा गया इति अथ श्रीमद् भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य। श्री कृष्ण परमात्मा देवता, नारद ऋषि, भक्ति ही शक्ति ही ब्रह्म बीजम ज्ञान वैराग्य कीलकम। जैसे राम रक्षा स्तोत्र में कहते हैं एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। स्तोत्र मंत्र है, संहिता, वेद है। रामचरितमानस के विषय में भी फिर हिंदुवान को वेद समझव नहीं परम, प्रकट कुरान। वेद तो संहिता एक संज्ञा है। दूसरी संज्ञा है भागवत को ग्रंथ। ग्रंथोयम अष्टादश साहस्र्यो। और तीसरी संहिता है पुराण। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम, वहां ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्म संहितम श्रुति सम्मत। इदम भागवतम नाम पुराणम। हवे मजा जुओ। आने संहिता कहो तो माच, कारण के संहिता शब्द स्त्रीलिंग। आने ग्रंथ कहो तो बाप छे, कारण के शब्द पुल्लिंग। અને આને પુરાણ કહો તો આ દ્રવ્ય છે, ધન છે, કારણ પુરાણ નપુંસકલિંગ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम द्रविणम त्वमेव। એટલા માટે યદ વૈષ્ણવાનામ ધનમ। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों प्रकार के शब्द का प्रयोग भागवत के लिए है। मतलब भागवत पुरुष नपुंसक नारीवा सब ब्रह्ममय है। तो भागवत प्रकट ब्रह्म है। तो भूमिका परमहंस की ये भूमि, कलेवर है श्रुति का, भाषा है समाधि, रंग है भगवा, रस है मधुर। थोड़ा आज गिरनारी कथा में अलग ढंग से भागवत भगवान का दर्शन करने का प्रयास है। रस है मधुर। पिबत भागवतम रसम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। दवा कड़वी होय पीवी पड़े, पीवे पण मोढू बगाड़ीने अन पीवे त्या मोढू बगड़ी जाए। कड़वाट पीधो एनु मोढू जोजो। पेला जट पीवे ज नहीं, हाथ में एमने कटोरी पकड़ीने पराणे पराणे पीवे अने पीधा पछी एनु मोढू गोळ लावो जट गोळ लावो, क्या पेंडो लावो, गोळ लावो।
અને આ સાંભળ્યા પછી મોઢા બગડી ન જાય, મોઢા ખીલી જાય. એનો રસ મધુર છે. मधुर रस की ऐसी महिमा है कि भोजन इत्यादि में भी अन्य अन्य रस होते हैं. કીધું ને બાસુંદી હું બનાવ્યું, બાસુંદી તો એકલી બાસુંદી થોડી હોય, પછી અરે પૂરી હોય, ખમણ ઢોકળા હોય, ચટણી હોય, મગની છૂટી દાળ હોય, કઢી ભાત હોય, ઊંધિયાનું બધું હોય. એકલા થોડા આવે ભગવાન, એની હારે પરિકર બાપુ એકલા ન આવે. એમ મધુર રસ મુખ્ય છે, બાકી બીજા બધા રસ છે, પણ મેન વસ્તુ છે મધુર રસ. અને એ મધુર રસ આપણે ત્યાં આમે તે એમ કે મધुरेण समापयेत. और इसलिए कथा सुनकर के जब निकलते हैं खिल जाते हैं. मोढ़ा बगड़ेला न हो, खिलेला हो. राम सभा में क्यांथी आवो छो? केने पा गया था? तो के राम सभा में रमवाने गया था. पसली भरी ने रस पीधो, हरि नो रस पूरण पायो. पहलो पियालो मारा गुरुजीए पायो. अन बीजे पियाले रसनी हेली, हरि नो रस पूरण पायो. बागेश्वरी मारा सदगुरुजी ना हाथे रे प्याली पीधी मैं तो. प्याली पीधी मैं तो प्याली पीधी मैं तो. मारा सदगुरुजी ना हाथे रे पीता मारे प्रीत बंधाणी. हे पीता मारे प्रीत बंधाणी. मारा शामळियानी साथे रे प्याली पीधी. प्रेम तणी लागी छे अग्नि, प्रगटी हाडो हाड रे. अरे अण समझू अज्ञानी मुझने, गांडी गणीने काढ़े रे. प्याली में तो पीधी. पिबत भागवतम रसमालयम. मुहु मुहु એટલે વારંવાર, અગેન એન્ડ અગેન. મુહુ રહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. પણ આ કોનું કામ? રહના ગોયા હોય એનું. હા, એ તો એ જેને રસ છે એ સંતવાણી છે એમ સાંભળે ત્યાં તો 2 વ્હીલર ને 4 વ્હીલર ને ટ્રેક્ટર જે મળે એમાં પોગે. અને પછી રાતો રાત બેહે પાછા. એ રહના ગોયા. આપણા શબ્દ પ્રયોગો એટલે આપણા શબ્દ પ્રયોગો. સાહેબ સૌરાષ્ટ્ર છે બાપા, રહનું ગોયું છે. पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव. भागवत की निमंत्रण पत्रिका लिखी जाए तो उसकी ड्राफ्टिंग व्यास जी ने तैयार करके दी है कि ऐसा लिखना चाहिए.
श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रं आयात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचिच्चिद्दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटाः सुज्ञ परम भगवदीय श्री रा रा એવું લખે ને કા રા રા રાજમાન રાજેશ્રી સંબોધન કરવાનું હોય તો આમાં સંબોધન શું કરવાનું તો ભાગવતની કંકોત્રીમાં લખવાનું શ્રી ભાગવત પીયુષપાનાય રસલંપટાઃ। હવે આમ કોકને લંપટ કેવું ને તો લપાટ મારે, લાફો મારે, લંપટ ગાળ કહેવાય। પણ અહીંયા રસલંપટ કેવો કોઈને, એનો મતલબ થાય રહનું ગોયું। भागवत पीयूष पान के लिए रसलंपटो, ए आओ मारा बाप आवो, अहिया रस उमड़वानो छे। सप्त दिन पर्यंत भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा का गायन होने वाला। अतः आयात प्रेम तत्पराः, प्रेम तत्पर होकर के हड़ी काढ़ो। ज्या हेड हेड थाओ छो त्या हूँ करवा रह्यो छो, पण आ बधा हेड हेड करता हो, एना करता न्याथी हड़ी काढ़ो। आया हरी घणा रो ने ड करे, अमुक ठेकाणे बोले ने तो एने र बोलता न आवडे, એટલે હરીને હડી કેમ છે? હડીની કૃપા। આનંદ મંગળ કડું આડતી, હડી ગુડું સંતની સેવા। પ્રેમ સહિત મારે મંદિરે પધારો। અમારા દરિયા કિનારાના અમારા બધા સાગર ખેડૂ ભાઈઓ છે ને, એને એની ભાષામાં ઈ ળનો ર કરે તો એક જગ્યાએ અને એટલા ધર્મ પ્રેમી, એટલા સાધુ સંતોના પ્રેમી પધરામણી કરવા જઈએ, એ મારા વાલા પાછા તું કરે બોલાય બધાને, આ બેહવાનું, અને પછી ઓલું કંઈક ધરે ને એટલે આપણે ફ્રૂટ તું લેવાનો કે નહીં। પછી આરતી ઉતારતા હતા ને ત્યાં તો આવડિયા જ ગાય, તો ઘણી વાર ગાય જ નહીં, પ્રસિદ્ધ આરતી છે। તો આરતી ઉતારતા ઉતારતા અને એ વખતની ભાઈ એ દરિયો ખેડે ને એટલે દુબઈથી ને બધેથી ઓલી રજાયું એ પહેલી વાર જોઈતી મેં ત્યારે, ગોદડા પછી આવી તૈયાર વિદેશની ઇમ્પોર્ટેડ રજાયું ઓલી એ બહુ ગરમ ગરમ લાગે, પોચી પોચી એ પાથરી રાખી હોય, ભરતકામવાળા બે કોર તકિયા હોય, ઓશિકા મૂક્યા હોય, ત્યાં બેહાડે, પગ ધોવાનો આગ્રહ, ચરણ પ્રક્ષાલન, ચાંદલા કરે, પૂજા કરે, આરતી ઉતારે ને પાછા ગાય, આનંદ મંગર કરું આરતી। હવે એમાં ઓલું આવે છે ને, સંત મળે તો મહાસુખ પામું, ગુરુજી મળે તો મારે મીઠા મેવા, એમાં અહીંયા ર નો અળનો ર કરે, એટલે કે સંત મરે તો મહાસુખ પામું ને મારા ગુરુ મરે તો મારે મીઠા મેવા, આનંદ મંગર કરવું આરતી। મેં કીધું ઊભા થાવ, હજી કથા 3 દી બાકી છે।
પણ એનો ભાવ. આયાત પ્રેમ તત્પરા. એ પ્રેમ ઉત્સુકતા જ્યાં હોય ને ત્યાં થયા થાય છે. એ થાય છે એમ કે ત્યાં તો આના પગમાં પાછી 60 ગાડી જતી હોય સીધી 80 90 પોગી જાય ઝડપથી, સીધા જઈને શ્રીનાથજીની સામે. आयात प्रेम तत्परा. वो कहते नावकाश कदाचित चेत दिन मात्रम तथापितु. यदि 7 दिनों के लिए अवकाश न हो तो एक दिन के लिए ही सही. અને માણા કે આજે કૃષ્ણ જન્મ છે, હાલો આજ હાજરી આપી આવીએ. દિન માત્રમ તથાપિતુ સર્વથા ગમનમ કાર્યમ ક્ષણોત્રૈવ સુદુર્લભ. भाई श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवों को भी दुर्लभ है ये. तो रस कौन सा है भागवत का? मधुर रस. श्रोत्र मनोभिरामात. और इसमें रस ही रस है, न छिलका है, न कोई गुटली है, बीज है, नहीं, कुछ नहीं, केवल रस. रसमालयम मतलब छिलका हो गुटली हो तो तुम फेंक दोगे इतना हिस्सा, रस को तुम ग्रहण करोगे, लेकिन इसमें फेंकने लायक तो कुछ है ही नहीं. न छिलका है न गुटली है. गुटली हो तो फिर से नया वृक्ष पैदा होगा, यहां कोई बीज है नहीं, इसलिए फिर वो संसार की यात्रा आगे बढ़ाने वाली बात नहीं. न छिलका है न गुटली है, केवल रस ही रस है. आनंद लेते रहो. रसम ह्येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति. और रस का तात्पर्य है श्री कृष्ण. रस मतलब परब्रह्म. वेद कहते हैं रसो वै सः. उस रस का अनुभव आनंद से भर देता. फिर सारी बातें फीकी लगती है, फिर छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है. तो भूमिका परमहंसी कलेवर निगम वेदनु, भाषा समाधि, रंग भगवो, रस मधुर. तो पारमहंस संहिता है, इसलिए अवधूत चिंतन है. दत्त अवधूत है, शुकदेव अवधूत है, सनत कुमार अवधूत है. उन अवधूतों के द्वारा मिली हुई ये अद्भुत चीज है. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. अवधूतम द्विजम कंचित चरंतम अकुतो भयम. आगे पुनः दत्त भगवान को प्रणाम करेंगे. आओ जरा कथा तंतु से जुड़ें और कृष्ण प्रागट्य की ओर बढ़ें. उसके पूर्व 2 मिनट श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव.
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण